हेलो फ्रेंड्स, यार कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। और यार अभी हम आ चुके हैं हमारे नोरा मदर्स हार्ट में, जहाँ पर एक्चुअली हम लोग जहाँ पर से बचकर अभी आ चुके हैं स्टेडियम में से वहाँ। तो उसने हरामी ने, उस हराम को टकले ने, जो वीरन है मेन, उसने हमारे जो सेक्रेट लैंड्स है नोरा के, वहाँ पर बहुत सारे एनिमीज और करप्टेड मशीन छोड़ दी है, जिसकी वजह से ये देखो ये तबाही तहस में सब कुछ हो चुका है, उसकी वजह से हुआ है। तो यार सबसे पहले तो ये एरिया पूरा क्लियर करना है, फिर ऊपर जाना है हमको मदर्स हार्ट्स में, वहाँ पे भी कोई लोग हो सकते हैं। ये देखो सबसे पहले तो ये करप्टेड मशीन को क्लियर करना है यार, ये सबसे हरामखोर मशीन है। चलो यार तो शुरू करते हैं मारने के लिए इनको, ठीक है। कैसे मारूँ देखते तेरे को। भाई इसने तो मेरे पैर भी करप्ट छोड़ दिए यार, मेरे को भी भ्रष्टाचारी बना दिया, हराम करो। तो ओ भाई माँ कसम, क्या उड़ी मार रही है मशीन, कैसे मारे इसको मैं। भाई ये बिच्छू पागल हो गए, बिच्छू पागल हो गया भाई। भागो, लंबा भागो, बिच्छू से लंबा भागो। उत्तरी कितनी मार रहे हैं, माँ करो पत्थर। अबे यार क्या फालतू यार, मशीन बहुत खराब है, मशीन फालतू मशीन है। कौन बनाता रहेगा मशीन, पागल साला। तो रुकने का नाम ही ले रहे ना वो, कैसे मारे इसको। साले जल हराम खोर, पत्थर लेके आ रहा है मेरे पास, बैग लेके आ रहा है, हरी भरी बैग। मारा मर साले, रुक जाते बेटा में खोपड़ी मामा। तो वो क्या उड़ी मार रहे हो, क्या ही उड़ी मार रहे हो भाई साहब। इसको तो जला कर मारूंगा इसको, देखो शेकोटी लगाऊंगा, शेकोटी इसके ऊपर शेकोटी जलाऊंगा। ओ तेरी माँ कसम भाई, क्या है इन लोग। अरे कितना तगड़ फेंक कर रहे रे भाई, बहुत तगड़ फेंक कर रहे हैं मनुष्य साले, मनुष्य मशीन है बहुत ही। तेरी माँ का चलती आ रही दिक्कत साली, चल के मेरे पास आराम कर। किधर गई साली, इधर भाग गई आराम कर। तुम यहाँ पर। अरे यार कचरा पट्टी यार बहुत, यहाँ पे सब टूटा फूटा गिरा हो यहाँ पे, बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी भाई मशीन है कि स्पाइडरमैन है, बिच्छू है कि स्पाइडरमैन साला। इधर से इधर उड़ी मार रहा है कब से। तेरी माँ का मैं तो बाजू में था, फिर भी मैं जो पत्थर लगा, ये क्या फालतू है। चल चल मेरी रानी, तिगड़ चल मेरी रानी। कैसा लग रहा है अब, कैसा लग रहा है जलकर साली हराम को ले तेरे ऊपर बॉम्ब भी फटेगा। ले कैसा ले, हाँ वो आएगी मत काटेगी मेरे को बच्चू। तेरी माँ का खट्टूस, किधर भाग रहा है, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं मैं घुस के मारूंगा साले। मर तो तेरी माँ का भाई पागल हो गया, किधर गया। और तेरी इधर है, इधर भाग गए। कल तेरी माँ का मर गया, मरा नहीं तो तेरी माँ का वापस मार दिया यार। अबे मशीन है, अबे क्या फालतू गिरी यार, कब से मार रही है मेरे को। चल
ये चेरी मेरे को पता क्लियर करता है इनको। इन लोग बच्चे अभी खाए तू क्या बे देखो तो घुस ले। और कौन है? तुमको तो जला कर मारूंगा, सबको जलाऊंगा, घोस्ट राइडर बनूंगा, घोस्ट राइडर। ले मुंह पे ले, फाइट भी ले, चल तू मर जा, तू भी जल, वापस मार, चल तेरी माँ का। ठीक है रे, चल साले। चलो नीचे वाला एरिया क्लियर कर दिया है, अभी ऊपर चेक करते हैं कुछ है क्या। वो ऊपर भी बंदे हैं, ऊपर भी है क्लिप्स। ओ स्क्रैपर, ओ माँ कसम पड़ी। चला सांप से पंगा कर दूंगा नंगा, जाने कोई चला इधर। घुसेड़ दिया। कौन है बे? आवाज आ रहा है इतना चलने का। थोड़ा हेल्थ बिल बढ़ाते यार। सब एमो फुल करके लेते पहला। The survivors must be holed up in the mountain. If the tunnel collapses, they'll be buried. And I will not reach the hatch. तो यार यहाँ पे रास्ता जल चुका है। ओ मदरचोद भाई, भाई इन्होंने तो यार थंडर जॉब को भी यार करप्टेड बना दिया इतनी बड़ी मशीन को, माँ कसम। वही बात नहीं यार, हम लोग के पास अच्छे वेपन्स भी है, थोड़े बहुत तभी मार सकते हैं इसको आराम से, जगह नहीं लगेगा। सबसे पहले तो उसका जो टीयर है, जो मशीन है, पार्ट को गिरा देंगे टीयर ब्लास्ट से, जिससे हम लोग को डिस्क लॉन्चर मिलेगा। ठीक है, वो मेरे आदमी लोग जिंदा है, मेरे आदमी लोग जिंदा है। ये बोलो जय बजरंग बली की जय। घुसता सालो, मारो उनको, घुस कर मार दो। हर हर महादेव। घुस जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। किधर गया साले थंडर का? भाई इसको तो मैंने गिराया था ना, अभी गिरा वापस। ठीक है नाइस, और एक गिरा। आज नाइस, नंगा कर दिया इसको हमने, इसके दोनों मशीन्स गिरा दिए हमने। अभी ये मुंह से गोली चलाएगा, रुको अब घुस कर मारेंगे। अभी टेंशन नहीं है, अभी वो डिस्क लॉन्चर निकल गया ना एक बार, टेंशन नहीं है। तू कहाँ भाग रहे वे? ओ तेरी भाई, किसको मारा है उसको पड़ी। एक तीर में दो निशाना नहीं, एक भाले में दो निशाने। सबसे पहले तो डिस्क लॉन्चर उठाएंगे, इसको फेल देंगे। रुको अभी मजा आएगा ना बिडू, अब मजा आएगा ना बिडू। किधर गया रे, किधर गया तू साले? ले 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 फाइट ले। बाइक गिर चुका है, टैक्सी से मारेंगे इसको और थोड़ा सा हेल्प बाकी इसका। चल जबड़ा फोड़ गया, जबड़ा फोड़ गया, खत्म। तो यार इसको लूट भी लिया है, और वो बचा है। ओ अकेले बच्चे, अकेला मारेगा भाई, फट गई इसकी, इसकी फट गई, हट गया टट्टी में। चल कर मर गया वैसे भी। नहीं भाई, और कौन है? अबे क्या छुप कर बैठा क्या पबजी के तरह क्लास में? We did it! Aloy did it! यार फाइनली सब कुछ क्लियर करते हैं, तो इसी के नाम पे एक जंगी सेलिब्रेशन हो जाए गोलियों से, गब्बर की तरह। हमारी जीत हो चुकी है दोस्तों इस पार्ट में, तो यार उसी के लिए हमने सेलिब्रेशन करवाया है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। तालियां बजाओ और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार दोस्तों।
seeker. Aloy, you saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. How many survived the attack? Nearly all the matriarchs, and many families, goddess be praised. But braves, just a few, and most of them are wounded. Never before has an enemy stabbed the heart of our people like this. Even the Karja, in all their red raids, never broke through to the embrace. Well, this enemy may have broken through, but they never got back out. We made sure of that. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines, driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. So the survivors took shelter in the mountain? By law, only matriarchs are allowed inside. It was Tirsa who broke the taboo, ordered the tribe into the mountain for safety. Lansra, well, she didn't agree. But I don't think anyone heard her over all the screams and shouting. Tirsa's decisions saved lives. Good for her. Common sense isn't always so common around here. Are your injuries serious? Bruises pale. Bones heal. Don't give me a hunting song, Varl. Are you okay? My body aches, but it's nothing that will keep me from fighting. I need to go inside the mountain. And the matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. तो यार बहुत बातें कर ली. अब जाते हैं अंदर, इसको फॉलो करते हैं मदर्स हार्ट ऑफ द नोरा में. अगला मिशन यहाँ से मिलेगा हम लोग को. कुछ तो अलग करने मिलेगा वापस यहाँ से. तो यार सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर गिरे थे, मतलब स्टार्टिंग गेम के स्टार्ट में एकदम स्टोरी मोड में, तो यहाँ पर हम लोग थे सोए हुए. जब हम लोग के पिताश्री की डेथ हो चुकी थी. वो मजा आ रहा है मेरे को. नाचो 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 मेरी गायो, नाचो बहनों. वो Aloy, किससे बात करनी है? you've come back, so you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. साली ये बुढ़िया अब तक सुधरी नहीं है. बचपन में हम लोग जब नामकरण हो रहा तभी भी आई थी. हरामखोर. बीच में टांगा डालना, अभी भी टांगा डाली. अरे बुढ़िया मर जाना, कितना टाइम लेगी यार. इसको कैसे जवाब दूँ? जान दे यार. हम तो अब तो हम बड़े हो चुके हैं. इसको है ना Lansra, प्यार it's से जवाब over. देते, प्यार से. It's time कोई to step बात नहीं, चलो. aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Finally. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Soga. You are clear to proceed.
to Aletheia Cradle 9. I see you're inside. Figured I might be hearing from you. Shall we begin? I never stopped. So this तो is फाइनली यार हम लोग अंदर आ चुके हैं नोरा जहाँ से हम लोग का जन्म स्थान है ये ऐसा इन लोग का कहना है नोरा लोग का कि हम लोग गेट के इस पार बचपन में पाए गए थे अरे यार छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे होलोग्राम में दिख रहे हैं मुझको क्या बात है यार क्या बात है बहुत मजा आ रहा है और ये क्या है ओ सांगड़ा गिरा इसको तो सांगड़ा तो नहीं इन लोग का ही सांगड़ा है ऐसे इनका ही रहेगा ये स्केलेटन देखो बात करें यहाँ पे जाना है कभी जाना है हमको यहाँ पर Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. Go away! What was this place, exactly? The dream of Apollo. Never realized. Why not? Dr. Sobek. Please skip. Elizabeth, this message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. भाई साहब ये क्या है Thus awakened, the Hades function गाया now seeks control of the गाया terraforming क्या system तूने गाया and ये क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है rendering हमको life on Earth extinct in रुको यार 53.8 सुनते days. क्या बोल रही For है obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth. This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the master override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all.
I only wish that I could hear your voice again. So, you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction and fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. तो यार ये रहस्य है एक्चुअली पिछले पूर्वजों का, अपने एंशिएंट लोगों का। इस तरीके से धरती तहस नहस हो चुकी थी और उसके बाद में हम लोगों ने पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म नहीं, लोग ह्यूमंस फिर से बसने लगे, लेकिन ऐसे तरीके से, मतलब वापस शुरुआत से। तो इस तरीके से पृथ्वी का एंड हुआ था। बहुत ही बुरा लग रहा है। रियल वर्ल्ड में ऐसा ना हो यार। बहुत ही फट रही है सब सुन के। ऊपर जाना है, देखते पहले क्या करने का यार। अरे चढ़ना ऊपर आंटी जी। This is going to be interesting. Aloy, forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! Up! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shunned me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Aloy! That she may forge the path for others to follow. भाई इतना रिस्पेक्ट हमको, एक नंबर भाई। बहुत ही प्राउड मोमेंट फील कर रहे हैं हम लोग अभी तक, क्योंकि यार बचपन से लेके अभी तक इस ट्राइब ने हमको आज तक रिस्पेक्ट नहीं दिया था। हर टाइम हम लोग मदरलेस चाइल्ड, और यार क्या क्या तरीके से हमको बोला था। अभी क्या बोलो यार इन लोग को। अब कहाँ से आई इतनी सारी सिंपैथी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन यार आउटकास्ट से पहले अभी हम लोग हक के हम लोग अभी दावेदार हैं अपने। इन लोग हमको मानते हैं गॉड। ठीक है यार, बहुत मजा आ रहा है सुनकर। नाइस यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार। बहुत मजा आ रहा है। लेकिन कुछ भी बोलो पे बैठे चले कहीं चले गए। बहुत मजा आ रहा है मेरे को, बहुत मजा आ रहा है। अजी हम जा रहे हैं नोरा। That will be for the god for the moment, and as I think. Tirsa,
I want to know Rost's story. Why he was made an outcast. He never told me. Said he took an oath of silence. What did he do? Oh. Yes, that. What crime did he commit? I will tell you if you wish. But it is a long story. Are you sure you want to hear it now? Of course I want to hear it. Tell me. Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. At Mother's Vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village, near the Karja border. But at the time, many families lived there. Ross was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. His daughter? What was her name? Alana. She was just 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? Or rescue the hostages? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a Brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened to Rost's daughter? She was killed? Rost was one of the Braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. There were 6 hostages still alive when they reached the border, Alana among them. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Why? Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a Death Seeker. A Death Seeker? What is that? One who dies to go seeking, and in seeking, brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to All Mother's care. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. I don't understand. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here with All Mother. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But Rost did return. Yes. A full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was delirious, in agony. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave
who'd lost a mate and 2 sons to the very outlanders that Rost pursued. So, Rost never finished his mission. To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian, Ban-Ur, the बहुत ही Plain, गहरी बातें चल रही है Utarland, अज्जी के साथ। further even यार, into the Forbidden देखते यार West. क्या अगला मिशन तो बहुत मस्त होने Last लगेगी। he ये तो यहाँ तक killed, के अब तक तो nearly एंड got हुआ नहीं गेम का मतलब। Wounded, और आगे भी बहुत कुछ he एक्सप्लोर करने मिलेगा यार। stumbled and crawled मतलब back to us, यार अभी इसका तो hoping to DLC भी die अपने as पास है, close ठीक to है the यार, sacred फ्रोजन land as he वाइल्ड could. तो उसका भी गेम प्ले He लाएंगे never यार, बहुत expected मजा and आया। asked to be dragged across the border and nursed back to चलो यार, health. That was done अज्जी through जल्दी बोलो ना, कितना टाइम लगा रही है मेरे को बात करने के leaving लिए? us, हाँ, इतना टाइम लगा रही है the बात करने के लिए? matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a death seeker, Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast. Yes. We offered to do so on the condition he never speak to anyone of this exception. After all he did, all he suffered, to be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the sacred land, let alone the embrace, so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. But then you found me, and gave me to him. Yes. Another compromise. The matriarchs feared you, and would not let you be raised by the tribe. And so we turned to Rost. I knew that he would take care of you, bring you up, teach you to worship All-Mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man who'd lost his daughter and made him raise an infant girl? Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as तो a gift. चलो यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसके अगले वाले पार्ट में, अगले वाले स्टोरी मोड मिशन में। तो तब तक के लिए यार लाइक करो वीडियो को और शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब भी करो चैनल को प्लीज। और हो सके तो बहुत शेयर करो, ठीक है? और यार अगले और भी ऐसे वीडियो आएंगे, अच्छे धमाकेदार वीडियो, गेम प्लेस, I wish I could have असेसिन done क्रीड more. खेलेंगे हम लोग, जैसे लॉन्च होता है वैसे ही, I am ठीक है? just one तो woman. चलो यार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। As am I. टेक केयर। No need to sell ourselves short. Oh, thank you, Aloy. I will pray for you. Okay, I guess it can't hurt. So she can cleanse the corruption that's still...